Good afternoon, guys. A very happy Holi to everyone. We are here for an exciting eliminator game of the B division of the PAYTM first games, TSL, between MISFITS and Mumbai Vikings. Requesting Aman to flip the coin and Karan to call. Heads. Heads is the call, and heads it is. We bat first. MISFITS have won the toss, elected to bat first. Any specific score in mind? Yes, we have a good batting lineup for today, and what we believe that we have a very strong bowling lineup, which is so anything above 170, 180 would be a very good defendable total on this track. And usually batting first on this track helps the batsman to get better score on this wicket. So that's the team choice what we have taken for today's match. All the very best. Thank you. Aman, what would you have done? Well, it doesn't really matter actually what we would have done. Right now we've been asked to contain them to a good score. So the plan would be just to keep it simple and not try to give them anything extra over 150, 160. That would be the plan. All the very best. Thank you. So the news from the centre is MISFITS have won the toss and have elected to bat first. Good afternoon, guys. A very happy Holi to everyone. We are here for an exciting eliminator game of the B division of the PAYTM first games, TSL, between MISFITS and Mumbai Vikings. Requesting Aman to flip the coin and Karan to call. Heads. Heads is the call, and heads it is. We bat first. MISFITS have won the toss, elected to bat first. Any specific score in mind? Yes, we have a good batting lineup for today, and what we believe that we have a very strong bowling lineup, which is so anything above 170, 180 would be a very good defendable total on this track. And usually batting first on this track helps the batsman to get better score on this wicket. So that's the team choice what we have taken for today's match. All the very best. Thank you. Aman, what would you have done? Well, it doesn't really matter actually what we would have done. Right now we've been asked to contain them to a good score. So the plan would be just to keep it simple and not try to give them anything extra over 150, 160. That would be the plan. All the very best. Thank you. So the news from the centre is MISFITS have won the toss and have elected to bat first. Good afternoon, guys. A very happy Holi to everyone. We are here for an exciting eliminator game of the B division of the PAYTM first games, TSL, between MISFITS and Mumbai Vikings. Requesting Aman to flip the coin and Karan to call. Heads. Heads is the call, and heads it is. We bat first. MISFITS have won the toss, elected to bat first. Any specific score in mind? Yes, we have a good batting lineup for today, and what we believe that we have a very strong bowling lineup, which is so anything above 170, 180 would be a very good defendable total on this track. And usually batting first on this track helps the batsman to get better score on this wicket. So that's the team choice what we have taken for today's match. All the very best. Thank you. Aman, what would you have done? Well, it doesn't really matter actually what we would have done. Right now we've been asked to contain them to a good score. So the plan would be just to keep it simple and not try to give them anything extra over 150, 160. That would be the plan. All the very best. Thank you. So the news from the centre is MISFITS have won the toss and have elected to bat first. Hello all, good evening. We welcome you to the eliminator match of the PAYTM First Games, the Super League. And this is a knockout match today being played at the Fatima Cricket Ground.
A wonderful match in the offing today. We welcome all of viewers who are watching this game live on the PAYTM First Games app. And two brilliant teams, Mumbai Vikings and the MISFITS, locking horns today. The MISFITS have won the toss and they've elected to bat first in this very important encounter, the Eliminator in the Super League. Just few matches left in this tournament and this is one of the most important matches. The winner of this match will meet Raging Rhinos in the second Eliminator, and the team losing will have to go back home. Two very good teams, the MISFITS winning the toss today. They elected to bat first and they've invited the Mumbai Vikings to bowl. Rukhsar Khan, left arm spinner, starting the proceedings, and the batsmen are at the crease. They've taken their guard. Varun Singh, the opening batsman, along with Himanshu Sonthalia, about to start the proceedings. Rukhsar with his first delivery of this Eliminator match in the PAYTM First Games, the Super League. Here we go. Wonderful conditions to play a brilliant game of cricket, and Rukhsar Khan coming to bowl his first delivery. He starts off. It's a good delivery. Trying to bring the ball back into the batsman. This is a new ball. A new shining ball given to a spinner right in the first over. Oh, and this time it swung into the batsman again. A quick single taken and they're off the mark. Varun Singh opens his account with a quick single towards the covers. Played it to the cover point, a single taken. Rukhsar Khan will now have to bowl to Himanshu Sonthalia, who's a left-hander. So a left-handed, right-handed combination being employed at the start of the innings. We'll have to see how he adjusts to the requirements of the left-handed, right-handed combination. Rukhsar Khan, a wonderful bowler he is. And this match, as we mentioned, being played at the Fatima Cricket Ground, the Vidyavihar vicinity of Mumbai. And we wish all our viewers a very happy and prosperous Holi as well. Oh, and that's a good delivery, but trying to sweep it. A quick single taken by Varun there. We'll have to see the umpire signal. And that did hit the bat, so no signal by the umpire. Himanshu also opens his account nicely. Varun back on strike. Rukhsar has bowled well. 3 balls, 2 runs given. That's a good start by any means. Another good delivery and played well towards the square leg for a single. A quick single taken by these two. So they have come with a lot of positive intent. And this is the way you have to start the innings. Quick running between the wickets will definitely help the cause. Himanshu on strike. Oh, and this time he tries to hit the big shot. Was that a catch? And it seems he's dropped it. The captain there, Amandeep. Oh, and that could have been the first blow by Rukhsar Khan. Unfortunate that the captain drops it. Standing at the catching position in the mid-wicket region. This time hitting the pads. Just a single, and that's the end of a very good over. Leg by single by the umpire. The score is 4 without loss after 1 over. We'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned, viewers. That's a good start by both the teams. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
Kanish Patel coming to bowl his first delivery, the second over in this innings. He loses his run up. A genuine pace bowler, Kanish. Himanshu on strike. Oh, and that's a wonderful start by Kanish. A leg by single by the umpire there. That was a good start by the tall paceman. And he has good pace as well. So Varun back on strike now. The score is 5. This is just the second over of the first innings in this eliminator match. Ganesh to Varun. It's a good delivery, well played by Varun there. In the gap, will that be a single only? Yes, the sweeper cover is there. Just a single. They've started off steadily and wisely, not trying to hit the big shots. However, there was a chance where Himanshu could have gone back to the pavilion. Be feeling lucky here to be staying at the crease still. There was a drop catch in the last over. Kanish with his next delivery. Himanshu back on strike. That's a wonderful delivery. A quick single taken by Varun again. So this is wonderful running between the wickets by these two. That's a very wise thing to keep the strike rotating on almost every delivery. No matter whether the run comes from the bat or it's a leg by or a by. But that's a very good strategy by these two. Not allowing the pressure to build up. Early nerves for the batsman Himanshu, but he survived. Oh, and that's a peach of a delivery. Wonderful by Kanish. This is what I was talking about. He has good pace and just need to bowl the right line. He can get that swing as well, which he got in the last delivery. Wonderfully bowled by Varun Singh. Beg your pardon, Kanish Patel. Varun Singh beaten all ends up there. Oh, and this time a poor delivery and Varun cashing on it. A wonderful boundary towards the fine leg. The first of the day and the innings. This is a wonderful shot and a poor delivery. Kanish will have to rethink his strategy. Have a look how far he's batting outside the crease. This time straying down the leg side. That's a poor delivery. Given the treatment by the opener. Bowling his next delivery, Kanish. Oh, and that's a wonderful delivery. What a comeback by the tall paceman. And he just running into the batsman after delivering the ball. Wonderful attitude and approach by the bowler, and that's the end of the second over. 11 runs without any loss. That's a good start by both the teams. No wicket taken, but they've controlled the run rate quite well. The Mumbai Vikings and the Misfits playing steadily and cashing on the poor deliveries as well. So Ruksar being brought for his second over now. This is his first spell in the third of the innings. Third over. 2 overs have been bowled. Misfits 11 for no loss. That's a good start. Oh, that's a good sweep shot straight to the fielder, but there is a square leg for that. And Ruksar not allowing the batsman to free his arms, just straying on his pads, but bowling with a length which is just
about the good or short of good length. Oh, and that's a good shot. This was a fuller delivery. This is a wonderful shot, and the boundary scored by Himanshu this time towards the deep mid wicket, his first in this innings. This is really good batting. They are waiting for the bad deliveries, and every now and then they are getting one or the other bad delivery. They're cashing on it big time. This is a good shot again. Fullish delivery. Bit of a flight as well, but Himanshu was ready for that. A wonderful boundary score. That's a good replay. Oh, and that's a wonderful delivery, and this time the keeper misses it. A single taken. Will that be by? We'll have to see. And that was an edge. No signal by the umpire. That goes down as a drop chance again. That was not an easy chance for sure, but then you will have to take these chances. This is an eliminator and knockout match. You can't just keep on leaving those chances. If these batsmen are well settled in their innings, you won't get many chances. So Misfits a bit lucky, but then Mumbai Vikings a bit sloppy currently with their fielding. So good delivery again, quick run taken, and this is wonderful running by both these players. We'll have to give it to the running between the wickets. This is absolutely brilliant stuff. Another quick single taken. Just playing with soft hands towards the point region, and a quick single. Some good sportsmanship spirit being displayed by the Mumbai Vikings players, which they've always done during the tournament. So we have high regards for them. All the teams have been really sporty throughout the tournament. Ruksar with his next delivery. Himanshu on strike. Will that be a fuller one? Oh, and this is a poor delivery wide down the leg side. And 5 runs given. So that's what happens when you try to do something extra. Just need to bowl wicket to wicket line. And Ruksar this time erring with his line. 5 runs gifted. Oh, and this time again he tries to cut it and misses it. Keeper not able to collect that again. So a very nervy start by the Mumbai Vikings team. They will have to come back strongly, as the score can go out of their hands. Currently the run rate is above 7 runs an over, which is a very good run rate without any wicket. So a very good start by the Misfits team. On his pads again, just a quick single. Will that be a leg by? Yes, leg by signal by the umpire. That's the end of the third over. 23 for no wicket. That's a good start by Misfits. We'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
Ganesh with his next over. It's a good start and a good shot by Himanshu straight to the fielder, but the extra cover in place. No single. Oh, and this time it's edged and above the keeper's head for a boundary. A lucky boundary there for Himanshu. That is what happens when you drop the catch of a regular batsman. Sometimes extra runs could be given, and this time the same happened. He was trying to aim the onside, but then took the edge, flew over the keeper's head. No chance for the keeper there. A boundary towards third man. Oh, and again an edge. What is this happening? Two edges and two boundaries. This time above the slips. The slip fielder not able to do anything. Two boundaries of two good deliveries, so the bowler should not be disappointed. Lose heart. He's bowling really well. Himanshu not getting in the meat of his bat. Runs are being scored, but then the line by the bowler is really nice. Ganesh is bowling really well. Himanshu has come with a lot of luck today, it seems. Today is his day. And a good shot this time. Pulled beautifully towards the mid-wicket boundary for a 4. What a shot that is. And this time, no iffy stuff by Himanshu. Just hits it wonderfully well from the meat of his bat. A short delivery attempted by Ganesh. He was ready for that this time. Pulling it from outside the off stump. Wonderful pull shot. And a wonderful replay as well. Extremely good camera work. Ganesh with his next delivery. And a quick single taken again. So this is wonderful batting and running between the wickets by both these batsmen. Varun back on strike. That was another good delivery. Ganesh has been wonderful in this over. And Himanshu has rushed to 20 of just 15 deliveries. Varun on 8 of 8 deliveries. So both the batsmen looking confident now at the crease. These small moments could make a very good match for the Misfits. These quick runs, the soft touches, really good running between the wickets. Shows the kind of preparation they've done for this eliminator. It's a knockout match. The one who loses will go back home. There's no choice. Oh, and that's a wonderful bouncer. But is that a wide? It is a wide. Very high bouncer. Probably the first bouncer for the over also, for the bowler. And umpire signals the first bouncer. So in an effort to bounce him out, he bowls a wide delivery. Ganesh trying to utilize the shoulder. That was a wide. Coming with the next delivery, Ganesh. Well, what a shot that is by Varun. Is that the first 6 of the match? And that is the first 6 of the match. What a shot by Varun, deep mid wicket. He just flicked it. Just a regular pick and an effortless 6 there. This is a replay of the previous boundary. What a shot by Varun Singh. That's the end of the over.
The score after 4 overs is 43 without loss. We'll take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन So 4 overs 43. All of a sudden the score has reached almost 50. More than 10 runs and over. A lot of discussions happening there. Kailash Bhatt being handed over the ball to bowl his first over. We'll show you the replay of that 6. What a shot that was. A brilliant pickup by the opening batsman Varun. And he's come into the act as well. What a shot that was. Just have a look at the pick. That was not a good delivery. A very full delivery, and that too on the leg stump. Just helped it towards the mid-wicket fence for a huge 6 over and above the fence. Kailash Bhatt coming into bowl his first over. Himanshu will face him. This is his first delivery. 4 overs 43 without loss, the Misfits. Wonderful start by both these opening batsmen. Kailash. Oh, and that was a short delivery. Cut really well. Just a single. The sweeper does well there. Not a good start. And the kind of start Kailash would not be hoping for, but he will have to immediately take corrective action here. Probably will have to improve his length. Oh, and this time it's a wide. Not a good start by Kailash. Extra given there. It's a good delivery and well played by Varun, was straight to the fielder there. The captain Amandeep doing a great job, not allowing the single to happen. Another wide down the leg side. Poor delivery again by Kailash. He will have to loosen up very soon. Not able to cash on that full toss. Varun there missing the trick. Oh, that's a wonderful delivery. Dot and almost took the edge. So Kailash coming back nicely with 2 dot balls. Another wonderful delivery this time. Missed it completely there, Varun. And a good work by the keeper as well, trying to run him out but not succeeding.
This is good bowling by Kailash. After two wide deliveries, come back really nicely. Has bowled 3 dot balls on the trot. Oh, and the inside edge this time, running towards the boundary for a 4. The fine leg boundary this time. Was not aiming to hit there, but took the inside edge. Let's have a look at the replay. That's the end of the over, and that's a 50 up as well with that boundary. 50 without loss after 5 overs. Both the batsmen have been riding on their luck today to an extent. .50 without loss. Abhishek Singh coming to bowl his first over, being introduced into the attack. And he's got him first delivery. Wow! Cotton bowled by Abhishek Singh. What a start by the spinner there. Just have a look at the replay. That was a good delivery to start, and Himanshu trying to smack it straight to the ball, and he takes a wonderful catch. Not at all easy taking a catch off your own delivery, and Abhishek has given the breakthrough that Mumbai Vikings were looking for. The first wicket falls on the score of 50. Himanshu playing good innings of 21. We'll have to go back to the pavilion. We'll take a quick commercial break. Be back soon, viewers. This is a good start by Misfits, but then they've lost their first wicket. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Hanif Sheikh is the new batsman. A wonderful batsman comes in at the expense of another wonderful batsman. But then that was a good start by Abhishek Singh. Takes a wicket on his first delivery of his spell. This is the 6th over. Oh, and this time a full toss on the leg side, and he's played it really well. Would that be a boundary? It is a boundary towards the deep backward square leg. Hanif starts off really well. And the Misfits batsmen are in the attack mode right from the word go today. That was a bad delivery. He started off so well, but then the follow-up delivery not that good this time. And Hanif was ready for that. It's did wonderfully well towards the deep backward square leg boundary. Abhishek with his next delivery.
And this time he cuts it in the air. What a shot that is. Will that be another boundary? That's a good stop by the fielder, but couldn't stop two there. The sweeper does well. Just have a look. It was a good throw as well, but then they could easily take two there. Another good shot by Hanif towards the long on, just a single. And they're trying to come back for the second on the overthrow. Hanif says no. He's not at all in a hurry. He's a very good batsman. We all know that. Today he'll have to play a gem of an innings, which he's capable of. This is an eliminator, a knockout match between these two teams, and someone will have to rise to the occasion from both the teams. And that's a good shot this time in the air. Will that be a boundary? It is a boundary. What a shot that is. Wide of long on, and this time Varun Singh coming into the act. It started off with a wicket this over, but has been an expensive one after that. Two boundaries, and this time in the slot. Varun just taking the advantage of the fielders not being outside the circle. This is good batting by Varun. This time no run taken, so that's the end of the 6th over. The score is 61 for 1. And we would like to inform all our viewers, just like we have all TSL matches, today also we have for you all our Hindi commentator, whom we'll request now to join us in the commentary box and present his wonderful Hindi commentary. We welcome you back into the commentary box, Shaleen, for this eliminator match. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों श्रोताओं का इस पेटीएम फर्स्ट गेम द सुपर लीग के एलिमिनेटर मैच में। एलिमिनेटर का मतलब होता है जो आपको प्रतियोगिता से निकाल दे अगर आप मैच हार जाओ तो। और ये कटु सत्य है जो आज किसी एक दल को स्वीकार करना होगा। मिसफिट्स की बढ़िया शुरुआत हुई है इस मैच में अभी तक, और ये तेजी से रन लेने आ रहे हैं। कैलाश यहां पर रन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और चूक गए। बहुत ही खराब ये रन लेने की कोशिश थी, हालांकि अंत में कोई नुकसान नहीं हुआ। कैलाश पहुंच गए थे वहां। वरुण वापस स्ट्राइक पर। हनीफ शेख ने ये रन लिया था। बेहतरीन तरीके से खेला इस बार वरुण ने, एक ही रन। कैलाश ने भी अच्छी फील्डिंग दिखाई वहाँ पर, बढ़िया क्षेत्ररक्षण गेंदबाज का अपनी ही गेंद पर। मिसफिट्स 63 पर आ गए हैं 6.2 ओवरों में सिर्फ, और बल्लेबाजी का निर्णय लिया था टॉस जीतकर मिसफिट्स के कप्तान ने। और ये विकेट ले लिया यहां पर। कैलाश के क्या ही कहने। हनीफ शेख सीधा नहीं खेल रहे थे और इस गेंद को वो कट करना चाह रहे थे, ऐसा लगा। बहुत ही खराब शॉट ये, और इतने अच्छे बल्लेबाज से इस तरह का शॉट हम की अपेक्षा नहीं करते हैं। ये देखिए सीधी गेंद थी ये, और ये खराब शॉट। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो क्लीन बोल्ड नहीं होते, लेकिन यहां पर कैलाश ने
हनीफ शेख को क्लीन बोल्ड करके पेविलियन वापस भेज दिया है। दूसरी सफलता यहाँ पर मुंबई वाइकिंग्स को और मिसफिट्स का दूसरा विकेट गिरता हुआ। कैलाश का पहला विकेट और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ ये मैच। अब धीमे धीमे मुंबई वाइकिंग्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। श्रवण राठौड़ आए हैं नए बल्लेबाज। करण रुइया मिस्फिट्स के कप्तान, उन्होंने आज टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। बढ़िया फैसला अभी तक, लेकिन ये 2 विकेट अब गिर चुके हैं। श्रवण राठौड़ आए हैं, बेहतरीन बल्लेबाज। कैलाश के भी क्या ही कहने, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। अच्छी शुरुआत कैलाश की और श्रवण ने भी लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन ले लिया पहली गेंद पर। यहाँ पर कैलाश को थोड़ा सा मेरे ख्याल से आक्रामक होना चाहिए। मिड ऑन आपको ले लेना चाहिए। नए बल्लेबाज आपके सामने आए हैं। वरुण सिंह को भी आमंत्रण देना चाहिए कि हवा में खेलें वो शॉट, और एक चाहे तो आप मिड ऑन ऊपर लेके लॉन्ग ऑन से थोड़ा दूरी पर एक ले सकते हैं। क्षेत्ररक्षक क्या गेंदबाजी है, वाह, तारीफ करनी होगी इनकी। बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह से चूक गए वरुण, वहां पर चकमा खा गए। और इस बार हवा में खेला वो शॉट, लेकिन ऊपरी किनारा लगा था बल्ले का। और बहुत बेहतरीन ओवर है कैलाश का। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया उन्होंने, हनीफ शेख जैसे मजे हुए बल्लेबाज का। और 7 ओवर में 64 रन हो गया स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अमोल पवार आए हैं नए गेंदबाज। कप्तान अमनदीप की अच्छी कप्तानी, बहुत ही बेहतरीन और अनुभवी खिलाड़ी हैं अमोल पवार, खास करके गेंदबाजी में। बाएं हथा गेंदबाजी डालते हैं। स्पिनर हैं, और बाएं हथा स्पिनर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट में, हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन शॉट इस बार श्रवण का, लेकिन क्या ये 6 होगा? ये कैच हो गए। देखिए, यही मैं कह रहा था। और अमोल पवार का अनुभव यहां पर काम आया है। फ्लाइट दी उन्होंने और
जाल में फंसाया फ्लाइट के श्रवण राठौड़ को और तनिष्क पटेल ने क्या बेहतरीन कैच लिया है लॉन्ग ऑन की बाउंड्री पर, यहां पर सीमा रेखा से थोड़ा ही पहले, एक कदम आगे ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। क्या बढ़िया कैच है, बहुत ही ज्यादा हवा में ऊपर की तरफ गई थी। महत्वपूर्ण विकेट श्रवण राठौड़ के रूप में गिरता हुआ, 3 विकेट गिर चुके हैं मिसफिट्स के। अमोल पवार की तारीफ करनी होगी, यहां पर तारीफ के हकदार हैं कप्तान अमनदीप भी, बहुत बढ़िया कप्तानी। और ये 64 पर 3 हो गया स्कोर। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सदानंद पुजारी आए हैं नए बल्लेबाज, हालांकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। वरुण स्ट्राइक पर, क्या गेंदबाजी है ये, और ये अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, लेकिन यहां पर ऊपर की तरफ लगी है, ऊंचाई है ज्यादा, उछाल ज्यादा मिला है ऐसा दर्शाते हुए ऑन फील्ड अंपायर, अपील खारिज। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी लेकिन अमोल पवार की। अच्छा शॉट डीप मिड विकेट की तरफ, 2 रन के लिए आराम से वापस आ गए वरुण। अच्छी गेंदबाजी की है अमोल ने, लेकिन इस बार बेहतरीन शॉट भी खेला वरुण ने। एक बार और अच्छी गेंद और हवा में खेला हुआ शॉट, चाह कहीं और रहे थे मारना, गेंद गई कहीं और, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन लिया। अच्छी गेंदबाजी है। इस ओवर की आखिरी गेंद अब बेहतरीन शॉट, क्या प्रहार है, 6 रन। और सदानंद पुजारी ने आते ही अपनी छाप छोड़ी है इस मैच में। पहली गेंद उनकी और उसे पहुंचा दिया उन्होंने सीमा रेखा के पार। क्या बल्लेबाजी है, वाह। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है अगर विकेट गिरा है अभी तो, या गेंदबाज बहुत अच्छा है सामने, वो अपना उत्तम खेल ही दिखाते हैं हमेशा। और ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन ऊपर से खेला, सिर्फ एक दर्शक वहां पर बने रहे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक। और ओवर की समाप्ति यहां पर 73 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद। अभी भी रन रेट जो है वो 9 रन प्रति ओवर से ऊपर का है। कैलाश भट्ट आए अपना तीसरा ओवर लेकर, बहुत बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी की है कैलाश भट्ट ने। 2 ओवर में सिर्फ 10 रन, लेकिन क्या सदानंद की चुनौती है। अच्छे से पार पा पाएंगे, अब देखना है। अच्छी गेंदबाजी, वरुण ने वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन ये सीधा खेलते अगर तो शायद ज्यादा सही रहता। और ये खराब गेंद, और ये चौका भी होगा। जी हाँ, आज होली का पावन उत्सव है, तो कैलाश ने सोचा
क्यों ना एक उपहार स्वरूप कुछ दिया जाए। और अब ये देखिए चौका दे दिया तोहफे के रूप में। बहुत खराब गेंद, वाइड, और उस पर चौका, 5 रन। अरे दूसरी बार ऐसा हुआ है आज पहली पारी में, तो ये बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं 10 रन जो दिए इन्होंने। अच्छी गेंदबाजी, वापसी अच्छी, लेकिन 5 रन दे दिया आपने। जरूरत नहीं थी उन 5 रनों की। आराम से समय लेकर गेंदबाजी डालनी चाहिए। हालांकि चूक गए कैलाश। और इस बार तेजी से 1 रन ले लिया। क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट से सदानंद पुजारी और वरुण की। वरुण तो शुरुआत से ही बहुत अच्छी कर रहे हैं रनिंग। सदानंद भी अब आ गए हैं अपने लंबे कदमों का इस्तेमाल करते हुए। आसानी से 1 रन पूरा किया। इस बार एक और अच्छा शॉट। क्या है, चौका होगा? जी हां, 4 रन। बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ, माफ कीजिएगा, कवर्स की तरफ खेला है शॉट। स्वीपर कवर ने कोशिश तो अच्छी की, लेकिन कोई मौका ही नहीं उनके पास इस गेंद को रोकने का। क्या बेहतरीन शॉट है फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक के पास, और ये मिसफील्ड। लक्षण से क्षेत्र रक्षण, 4 रन दे दिए वहां पर। ये बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ। आपको रिप्ले दिखाएंगे, देखिए कितनी आसानी से ये प्रहार करते हैं गेंदों पर। ये देखिए खराब क्षेत्र रक्षण, 2 रन हो जाते तो भी चल जाता। चौका दे दिया यहां पर। और ये क्लीन बॉल, क्या जबरदस्त वापसी कैलाश की। सदानंद पुजारी का विकेट दिया है। खासे महंगे साबित हुए थे अभी तक इस ओवर में, लेकिन क्या वापसी की है, वाह। कप्तान ने इनकी सारी गलतियां माफ कर दी होंगी, इतना बड़ा विकेट इन्होंने लिया है। बहुत बेहतरीन ये गेंदबाजी। आपको रिप्ले दिखाएंगे, सीधी गेंद डाली, तेज गेंद, और सदानंद चूक गए वहां पर। ये देखिए नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी। ऐसा लगा कि यॉर्कर थी ये लॉक होल में। और ये चौथा विकेट भी गिरता हुआ मिसफिट्स का, 87 पर 4। हालांकि सदानंद ने कम समय में बेहतरीन पारी खेली, सिर्फ 4 गेंदें खेली हैं और 14 रन बना दिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। कैलाश भट्ट का दूसरा विकेट, 3 ओवर में उन्होंने 24 रन दिए हैं। 9 ओवर के बाद स्कोर है 87 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अंपायरों का निर्देश है ड्रिंक्स ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। अमोल पवार आए अपना अगला ओवर लेकर। स्ट्राइक पर वरुण सिंह, करण रोहिया कप्तान जो हैं टीम के, वो आए अब बल्लेबाजी करने। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। पहली गेंद इस ओवर की, 10वां ओवर ये। बढ़िया गेंदबाजी। अच्छा शॉट इस बार गैप में खेला है। क्या 2 रन के लिए आएंगे? जिन्हें एक ही रन। और यहाँ पर खराब क्षेत्र रक्षण, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरे रन के लिए वापस नहीं आए। रन की पहली गेंद, अच्छा खेला, तेजी से रन ले लिया, और वहाँ कोई है नहीं। लेकिन कप्तान अमनदीप की बढ़िया बैकिंग अप। बेहतरीन स्वीप शॉट, 4 रन। क्या शॉट है, वरुण सिंह की तारीफ करनी होगी। वरुण सिंह बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में, 32 पर आ गए हैं। क्या शॉट खेला उन्होंने, स्वीप किया उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, 2 रन के लिए वापस आना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्षेत्ररक्षण लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक द्वारा। रन आउट होते होते बच गए यहाँ पर। हालांकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर में 94 रन स्कोर है। 4 विकेट के नुकसान पर 9.4 का रन रेट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपसे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
कप्तान अमनदीप खन्ना आए हैं अब, चड्ढा माफ कीजिएगा, अमनदीप चड्ढा गेंदबाजी करने। बेहतरीन कप्तान है, बहुत बढ़िया हरफन मौला खिलाड़ी भी। अब देखना है कि रनों की इस रफ्तार को क्या वो रोक पाते हैं। एक बार फिर से स्कोर अच्छा हो गया है मिसफिट्स के लिए, 4 विकेट गिर चुके हैं उनके, लेकिन 94 का स्कोर 10 ओवर में बहुत बढ़िया कह सकते हैं आप। इन्हें वरुण का विकेट लेना पड़ेगा अगर इन्हें स्कोर के अंबार को रोकना है। बढ़िया शुरुआत, और ये बहुत बेहतरीन रनिंग है। देखिए 2 रन के लिए आराम से आ गए, और क्या ये आउट हैं जी? नहीं पहुंच गए। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आराम से खेला स्वीपर कवर की दिशा में, दूसरे रन के लिए भी बहुत तेजी से आ गए। या मिसफिट की तारीफ करनी होगी, आज बहुत ही मानसिक रूप से वो तैयार होकर आए हैं इस नॉकआउट मैच के लिए। और रनिंग की तो खास करके तारीफ करनी पड़ेगी। वरुण सिंह बहुत ही बेहतरीन रनिंग कर रहे हैं पहली गेंद से, और रन कैसे चुराने हैं आप देख सकते हैं वरुण सिंह को, बहुत बेहतरीन नमूना पेश कर रहे हैं। वरुण भैया ने भी इस बार बढ़िया समर्थन दिया उनका, 2 रन ले लिए। छोटी गेंद, खराब गेंद, भाग्यशाली थे कि बड़ा शॉट नहीं लगा, अच्छी गेंद नहीं थी ये, हालांकि यहाँ चूक जो है बल्लेबाज से हुई है। अमन की अगली गेंद, और इस बार हवा में खेला हुआ है शॉट, क्या ये आउट हो पाएंगे? क्या ये कैच लिया जाएगा? ये कैच ही है, और ये बच गए। इस बार भी भाग्यशाली रहे वरुण। अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, करण ने उसे पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए इस बार। खराब गेंद ये, और ये फुल टॉस पर 2 रन ले लिए। बढ़िया यहां पर रनिंग फिर से, 2 रन ले लिए, और हाथ से छूट गई थी ये गेंद। ये देखिए आपको आएंगे कैसे वो कैच, बहुत मुश्किल जो था, अगर हो जाता तो क्या ही बात होती। आशीष फौजदार थे वहां पर, और ये देखिए पहुंच नहीं पाए वहां तक, भाग्यशाली बल्लेबाज। अमन की अगली गेंद, 5 गेंदों पर 5 रन दे चुके हैं, इनका पहला ओवर है और 99 पर आ गया स्कोर। अगर 1 रन और लेते हैं तो हो जाएगा। बढ़िया शॉट, और ये चौका होना चाहिए, गैप में खेला है बेहतरीन, लेकिन ये, और ये पहुंचने के बाद छोड़ दिया, और 100 रन पूरे 11 ओवर में। 103 है स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। लचर क्षेत्ररक्षण पहुंच गए थे वहां पर, उसके बाद भी नहीं पकड़ पाए। ये देखिए ना, बढ़िया प्रयास था, और पैरों से रोकने के प्रयास में बाएं पैर से रोकना चाह रहे थे, दाहिने से रोकते तो फिर भी शायद हो जाता, लेकिन आप पहुंच गए तो आप झुक भी सकते थे। तो ये लचर ही कहा जाएगा क्षेत्ररक्षण। 103 हो गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, और मिसफिट्स भले ही विकेट अपने गंवाते गए हैं, लेकिन रन रेट में कोई कमी नहीं आने दी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उनकी आक्रामक स्ट्रैटेजी, रणनीति आज की। जैसा कि हमारे साथी ने पहले ही बताया कि बहुत तैयार होकर आए हैं मिसफिट्स आज इस मैच के लिए मानसिक तौर पर। क्रिकेट सालों से खेला जा रहा है, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस खेल को, लेकिन अभी भी 70% गेम ये दिमाग का है और 30% आपकी प्रतिभा का। बेहतरीन शॉट, 4 रन। खराब गेंद यहां पर पैड्स पर डाला हुआ फुल टॉस, और उसे स्वीप किया 4 रन के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में।
वरुण सिंह ने। वरुण सिंह खासे बेहतरीन फॉर्म में 40 पर आ गए हैं 34 गेंदों के बाद। पर आपको रिप्ले दिखाएंगे, देखिए फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, पैरों पर डाली हुई गेंद, 4 रन के लिए आसानी से भेज दिया उसे वरुण ने। अमोल पवार को अपना नियंत्रण वापस लाना होगा। दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम बेहतरीन शॉट, ऊपर की गेंद, क्या शॉट मारा है, बड़ा छक्का होगा। जी हां, 6 रन। और अमोल पवार खासे महंगे साबित होते हुए, अनुभवी गेंदबाज हैं उसके बावजूद रोक नहीं पा रहे हैं मिसफिट्स के बल्लेबाजों को। खास करके वरुण सिंह की तो तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। क्या शॉट खेला उन्होंने। रिप्ले दिखाएंगे, देखिए कितना बेहतरीन पिकअप था ये पिछली गेंद का रिप्ले है। माफी चाहेंगे आपसे, हालांकि चौका भी बेहतरीन ही था। अमोल की अगली गेंद, बहुत ही हल्की गेंद। एक भी रन नहीं इस बार। बढ़िया शॉट इस बार, गैप में खेला हुआ, हालांकि एक ही रन होगा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। देखिए क्या बेहतरीन छक्का मारा था वरुण ने। और इस बार फिर से एक बेहतरीन शॉट, एक ही रन हालांकि डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। बड़ा छक्का है वरुण के बल्ले से। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, और ये खराब क्षेत्र रक्षण, लचर क्षेत्र रक्षण। और ये 50 रन पूरे वरुण के। क्या अर्धशतक है, वाह, तारीफ करनी होगी। और कितने सही मौके पर आया है। और वो जो कहावत है अंग्रेजी में, हीरोज विल राइज टू द ओकेजन, वो यहां पर बहुत ही ज्यादा सही बैठती है। वरुण के लिए आज हीरो बनने का पूरा मौका था और उन्होंने इसे गंवाया नहीं। सलामी बल्लेबाज, 51 की बेहतरीन पारी, क्या अर्धशतक लगाया है 38 गेंदों पर सिर्फ।
अभी भी 8 ओवर बचे हैं, 12 ओवर के बाद 119 रन, 4 विकेट के नुकसान पर एक बड़े स्कोर की तरफ मिसफिट्स बढ़ते हुए। अगर इन्हें रोका नहीं गया इन दोनों बल्लेबाजों को तो शायद 200 भी बना सकते हैं। अमन चड्डा आए अगला ओवर लेकर, कप्तान है, पहले ओवर में 9 रन दिए इन्होंने। ये कितना बेहतरीन छक्का एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, मारा था वरुण ने। और ये वाइड होना चाहिए, जी हाँ वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। अच्छी वापसी यहां पर इस बार अमनदीप चड्डा की, कप्तान है इस टीम के। बाकी रन अच्छे खासे अब बन चुके हैं। बेहतरीन शॉट हवा में खेला हुआ, क्या ये चौका होगा? और ये 4 रन, कोशिश अच्छी थी वहां पर, बढ़िया प्रयास, लेकिन चौका नहीं रोक पाया और अमनदीप चड्डा खासे निराश। लचर क्षेत्र रक्षण हो रहा है और आज बहुत बार ऐसा देखा है, तो अगर इस तरह की आप फील्डिंग करेंगे एक बड़े मैच में तो आपको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बार 1 रन पर आएंगे वापस वरुण सिंह। अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद इस बार निकलवाई अमन ने। 13वां ओवर चल रहा है ये। और ये गुगली डालने का प्रयास, हालांकि लेग स्टंप पर गई ये गेंद। गेंद अच्छी थी, इसी गेंद को आगे डालकर अगर स्टंप पे डालते तो क्या ही बात होती। गेंद बहुत बढ़िया प्रयास है। शॉट तेजी से लिया हुआ, 1 रन, क्या पर रन आउट होंगे? जी नहीं, पहुंच गए करण रुइया। और अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 ओवर के बाद स्कोर 128 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अब हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेजी कमेंटेटर से कि वो आएँ और बेहतरीन अंग्रेजी कमेंट्री प्रस्तुत करें आप सभी दर्शकों के लिए। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम कैलाश आए हैं ना, आखिरी ओवर लेकर 3 ओवर में 24 रन और 2 विकेट। बढ़िया गेंदबाजी की, हालांकि रन खा गए पिछले ओवर में बहुत, लेकिन सदानंद का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लेने में कामयाब भी हो गए। सफल अभी तक का स्पेल इनका 2 विकेट ले चुके हैं।
तेज़ी से लिया 1 रन और अनुरोध करेंगे आपसे शाल्स कि आप आएँ और अंग्रेज़ी कमेंट्री प्रस्तुत करें. Thanks a lot, Charlene, for your wonderful Hindi commentary. And MISFITS have scored really good till now today. Wide delivery again by Kailash, so a lot of extras being given. Wonderful shot in the air. Will that be a boundary? It is a boundary. What a shot that is by the captain, Karan Ruya. Absolutely brilliant shot played towards the deep covers for a 4. We'll show you the replay. What a shot that was. Playing it on the up for boundary. Wonderful shot. That was a wide delivery too, so allowing the batsman to free his arms. Trying the same shot again, but this time not succeeding. Just a dot delivery. Oh, and probably he missed that. That was a full toss. Should have been converted. Missed that. Wonderful shot, and this time another boundary. A sloppy work by the long off fielder again. This will not help at all. This is a knockout match. They have to understand the fielders. They have to back their bowlers. They cannot just keep on letting runs flow from the bat, and misfieldings are helping the cause. Just have a look. Good delivery by Kailash. He's bowled really well, but a lot of runs scored that over also. So 139 for 4. Kailash finishes off his spell. 34 he gave in the 4 overs. He took 2 important wickets. We'll take a quick commercial break. Be back soon. 139 for 4 after 14 overs. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है. कैन हेल्प. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें. Single that time towards cover point. Quick single taken there. Good running by both these batsmen. Varun back on strike, playing 59. Oh, and this time seems he's gone. The umpire not interested, and the keeper just very confident there. We don't know whether that's an edge or not.
Oh, and that is a poor bit of fielding again. This will rush towards the boundary, it seems. Oh, and finally stopped before the boundary by the captain himself. 2 runs given again. Sar Khan not at all happy. This is really poor fielding by the Mumbai Vikings team. Almost every fielder has given away extra runs or dropped catches, so this is not at all a good sign for any team. Such things happen regularly. That was a good delivery. A dot again. A full shot towards the long off for just a single. Another good shot, but straight to the covers fielder for no run. Karan Roy on strike, captain of the team. And that's the end of the 15th over, 143 for 4. Take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Amol Pawar, flattest trajectory this time, a big shot play, will that be a catch? And he has taken it this time. This is wonderful fielding by Tanish. Again, Kanish Patel. Beg your pardon, that is Kanish Patel. Amol Pawar gets his second wicket, and this time Varun Singh finally. Have a look how high it went. Varun Singh finally perishes after playing a wonderful innings. 143 for 5. Misfits and Amol Pawar would be a relieved man. Varun Singh 62 of 50 deliveries. He's played a really good hand. We'll take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और Karan Roya on strike. Amol Pawar bowling to Karan Roya. Oh, and that's a wonderful delivery. Trying to cut that very close to the off stump. Very lucky it didn't hit the off stump. That's a wonderful shot. Oh, and he's probably not able to see the ball. The fielder just lets it go. A boundary there, and Amol Pawar not at all a happy man. This could have been avoided. Probably the sun rays coming in his eyes, and
This is really sloppy. Just taken a wicket. You can't allow the new batsman or even the existing batsman to settle even better. Boundary given. Should have been only a single. Amol Pawar's last over of his spell, 3.4 overs, 38 he's given, 36 I beg your pardon, has been expensive. But cannot blame him entirely. And that's a good shot again towards a sweeper cover, just a single. This seems to be a wide. It will be a wide down the leg side. It's a good comeback by Amol. That's the end of his spell. 38 for 2 in his 4 overs. And the score is 16 overs, 149 for 5. So last 4 overs remaining. We'll request our Hindi commentator Shaleen to come back into the commentary box and take you through till the end of this innings. We welcome you back again, Shaleen, in the commentary box. जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे जल्द ही. कनिष पटेल आने गेंदबाजी करने. एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत वापस आते हैं. बने रहिए हमारे साथ. और सचिन जी करिए सिलेक्ट. मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है. अरे रे सो सैड. सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल. तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ. अब खेलने में मजा आएगा. सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए. पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर कनिष पटेल की गेंदबाजी पर 26 रन जा चुके हैं सिर्फ 2 ओवरों में. तो बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं शुरुआत में. हिमांशु और वरुण ने रन निकाले थे इनके गेंदों पर. हालांकि गेंदबाजी इन्होंने ख़राब नहीं की है. एज लगे थे बहुत भारी किनारे चौकों पर की तरफ जो गए. अब देखना है करण रुइया क्या करते हैं. बेहतरीन शॉट और ये 150 रन पूरे 1 रन लेकर थर्ड मैन की दिशा में करण रुइया ने अपने दल को पहुंचाया 150 पर. 24 पर खेल रहे हैं नाबाद 17 गेंदों के बाद. बेहतरीन शॉट, पुल किया इसे 4 रन के लिए. क्या शॉट है. सनी सोमराजन आए हैं नए बल्लेबाज और आते ही जलवा दिखाते हुए. सिर्फ दूसरी गेंद थी उनकी ये. 4 रन के लिए डीप स्क्वायर लेग में बेहतरीन पुल शॉट मारा. और रिप्ले दिखाएंगे. देखिए क्या बेहतरीन शॉट मारा है. छोटी गेंद तैयार थे इसके लिए. क्या शॉट है. जितनी भी तारीफ की जाए कम है. अगली गेंद बढ़िया गेंद और अच्छी बल्लेबाजी भी. हालांकि एक भी रन नहीं. और ये छोटी गेंद एक बार फिर से, लेकिन पूरी तरह प्रहार कर नहीं पाए. तेजी से 1 रन ले लिया लेकिन बढ़िया रनिंग करण रुइया की और सनी की.
17वां ओवर चल रहा है। एलिमिनेटर मैच है ये, नॉकआउट मैच। जो भी टीम हारेगी आज इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। और जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा रेजिंग राइनोस के दल से। और इस बार हवा में खेला हुआ बढ़िया शॉट, क्या ये चौका होगा? जी नहीं, एक ही रन है। दूसरे के लिए आना चाह रहे थे करण, लेकिन बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहाँ पर कप्तान अमनदीप का। और इस बार एक रन लिया। कनिष्क के ओवर की समाप्ति हुई। 17 ओवर के बाद स्कोर है 157 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर बचे हैं, 18 गेंदें। इतना कहाँ तक ले आते हैं स्कोर? रुखसार आए हैं अपना आखिरी ओवर लेकर। बढ़िया शॉट सनी सोमराजन का, तेजी से एक रन ले लिया। हालांकि सीधे ओवर्स के हाथ में था, लेकिन रन लेने में तो माहिर हैं इनके खिलाड़ी। मिसफिट्स की तारीफ करनी होगी एक दल के रूप में। बेहतरीन शॉट, क्या ये छक्का है? जी हाँ, 6 रन। क्या शॉट मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। वाह, बहुत ही करारा प्रहार ये। बॉटम हैंड का बल प्रयोग किया पूरी तरीके से। ये देखिए, बहुत बढ़िया शॉट, क्या छक्का मारा। और एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये 4 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान करण रोहिया, बहुत बहुत तारीफ करनी होगी इनकी। स्कोर देखिए 168 पर आ गया। अभी भी 15 गेंदें बची हैं इस पहली पारी में। शॉट था 4 रन के लिए। एक और बड़ा शॉट, क्या इस बार चौका मिलेगा? जी हाँ, 4 रन। एक और, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। और हाथ खोलने से चूक नहीं रहे, इसलिए जो किनारे भी लग रहे हैं वो इतने मोटे और अच्छे लग रहे हैं कि चौके जा रहे हैं। इस बार थर्ड मैन की दिशा में 4 गया। तो रिप्ले दिखाएंगे। देखिए 3 चौके लग चुके हैं। रुखसार खान के सारे आंकड़े खराब कर दिए इन्होंने। ये देखिए, भारी किनारा लगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से लगा था। बॉटम हैंड का इतना बल था उसमें। 4 रन के लिए गेंद चली गई थर्ड मैन की दिशा में। बोले तेजी से एक रन ले लिया। इस बार चूक हुई वहां पर विकेट कीपर से।
नुकसान की आखिरी गेंद, बेहतरीन शॉट। क्या ये बड़ा शॉट है? जी नहीं, ये कैच हो गए हैं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया कैच लिया कैलाश ने, तारीफ के योग्य क्षेत्ररक्षण। और ये एक और विकेट गिरता हुआ, छठा विकेट गिरता हुआ 18वें ओवर की समाप्ति के बाद। 173 रन स्कोर है, 6 विकेट के नुकसान पर मिसफिट्स का बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। आखिरी 2 ओवर बचे हैं और देखना है कि क्या रणनीति बनाते हैं। अभी भी 200 रन पहुंच सकते हैं अगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। सारे बल्लेबाज इनके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। रिप्ले दिखाएंगे, देखिए हवा में खेला हुआ शॉट सनी सोमराजन का, बहुत ही आसानी से कैच ले लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच और कोई चूक भी नहीं हुई क्षेत्र रक्षक कैलाश के द्वारा। गणेश पटेल आए अपना आखिरी ओवर लेकर, 3 ओवर में 34 रन दे चुके हैं, खासे महंगे। एक भी विकेट नहीं मिला है। अब देखना है कि इस ओवर में कैसे गेंदबाजी डालते हैं। बेहतरीन शुरुआत कनिष्क की, 11 गेंदें बची हैं अब। अगली गेंद, बढ़िया शॉट, पुल किया उसे 4 रन के लिए डी स्क्वायर लेग की दिशा में। बढ़िया शॉट। ये क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। निखिल लेखी आए हैं नए बल्लेबाज और आते ही ताबड़तोड़ अपना लिया अपना। करण रुइया 39 पर खेल रहे हैं, कप्तानी पारी खेलते हुए 22 गेंदों के बाद। क्या शॉट था। उन्नीसवें ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं, 177 रन स्कोर है, बहुत ही बेहतरीन स्कोर बन चुका है। निखिल लेखी ने आते ही दूसरी गेंद पर ही अपनी चौका लगाया है। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, क्या यहाँ पर ये आउट होंगे? जी नहीं, कोई भी नहीं है क्षेत्र रक्षक वहां पर। 2 रन मिल गए आराम से और इस बार रन आउट की कोशिश, निखिल पहुंच गए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। आपको रिप्ले दिखाएंगे कैसे पुल खेलना चाह रहे थे। ये देखिए बेहतरीन शॉट था पिछली गेंद पर 4 रन के लिए। कनिष्क की अगली गेंद, क्या शॉट है। सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। एक भी रन लेने में मुश्किल हो सकती थी अगर थ्रो करने की कोशिश करते, लेकिन 1 रन ले लिया अंत में। स्ट्राइक पे कप्तान करण रुइया वापस आए हैं। गणेश की अगली गेंद, 2 गेंद बची हुई इस ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी है, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। डॉट गेंद,
और ये ख़राब गेंद, वाइड होगी ज़रूर। जी हाँ, कोई शक ही नहीं इसमें। तुरंत अंपायर ने वाइड का इशारा किया और एक और ख़राब गेंद, एक और अतिरिक्त रन दे दिया है। 181 हो गया है स्कोर। बड़ा स्कोर चेस करना पड़ेगा अब मुंबई वाइकिंग्स को अगर ये मैच जीतना है। ये देखना है कि क्या 200 रन बन पाते हैं। 7 गेंदें बची हैं इस पहली पारी में। अच्छी गेंद और रन लेने की कोशिश। और तीसरे अंपायर की मांग की, रन आउट करना चाहा वहां पर, विकेट कीपर ने सफल भी हुए, लेकिन क्या रन आउट हुए हैं ये देखने के लिए तीसरे अंपायर की मांग की गई है। ये देखिए जो चौका मारा था, बेहतरीन शॉट, उसका रिप्ले दिखा रहे हैं आपको। हालांकि तीसरे अंपायर अपना निर्णय थोड़ी देर में देंगे। नॉट आउट का इशारा अंपायर के द्वारा, और आप देख भी सकते हैं नॉट आउट क्यों है। बहुत ही आसान सा ये निर्णय। जी हाँ, क्रीज के अंदर ही थे। ये देखिए गेंद लगने से पहले ही क्रीज के अंदर आ गए थे। बहुत ही आसान सा निर्णय है, ज़रा सा भी समय नहीं लिया तीसरे अंपायर ने। 19 ओवर के बाद स्कोर 181 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। इस पारी का आखिरी ओवर अब। और ये आखिरी ओवर डालने आ रहे कप्तान अमन चड्ढा। पहली गेंद पर 4 रन, पारी किनारा, और थर्ड रन की दिशा में गई गेंद 4 रन के लिए। और ये हल्की गेंद डाली, स्लो डिलीवरी। दूसरे रन के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक ही रन लिया डीप मिड विकेट क्षेत्र रक्षक के पास से, मौका नहीं दिया दूसरे के लिए। और 186 हो गया है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें बची हैं इस आखिरी ओवर की।
अमनदीप चड्डा अगली गेंद लेकर आते हुए, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अच्छा शॉट भी है। क्या यहाँ पर 2 रन हो जाएंगे? जी हाँ, दूसरे रन के लिए आसानी से भाग लिए। अच्छा क्षेत्र रक्षण था ये, हालांकि 2 रन नहीं रोक पाए। और इस बार मारना कहीं चाह रहे थे, लेकिन गई गेंद ऑन साइड की तरफ, मिड ऑन की तरफ भाग कर आए लॉन्ग ऑन क्षेत्र रक्षक और 1 ही रन। अच्छी गेंदबाजी है अमन की। इनका तीसरा ओवर है और पारी का आखिरी ओवर। 26 रन दे चुके हैं 2.5 ओवरों में, तो अच्छी गेंदबाजी की है। हालांकि रन बहुत बन गए हैं, 189 रन हो गए हैं। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि अगर विकेट नहीं गए तो बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, हालांकि 200 नहीं बन पाएंगे। और ये बेहतरीन शॉट, 6 रन होना चाहिए और ये कैच हो सकता था, लेकिन यहां पर चूक गए। 1 ही रन हुआ ये और ओवर की समाप्ति। बहुत ही ज्यादा आखिरी गेंद पर ये ड्रामा देखने को मिला है, आप देख सकते हैं। 190 रन हो गया है अंतिम स्कोर है। देखिए कैच हो सकते थे, हालांकि कैच छूट गया, 1 रन अतिरिक्त बन गया। कैच हो जाता तो अमनदीप का पहला विकेट हो जाता। हालांकि मिसफिट्स काफ़ी खुश होंगे, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, टॉस जीत कर 190 रन बना लिए हैं। अंतिम स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर, आप देख सकते हैं। 62 की बेहतरीन पारी वरुण के द्वारा, करण रुइया कप्तान। 42 रन की बेहतरीन पारी सिर्फ 26 गेंदों पर। निखिल लेखी ने भी 13 गेंदों की अच्छी पारी खेली, 13 रनों की अच्छी पारी खेली सिर्फ 8 गेंदों पर। और ये देखिए सारे गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई है। 190 का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 191 लक्ष्य दिया है मुंबई वाइकिंग्स को मिसफिट्स ने। और हम थोड़ी देर बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। इस एलिमिनेटर मैच में 191 रन चाहिए 120 गेंदों पर, 9.55 रन प्रति ओवर के रन रेट के हिसाब से मुंबई वाइकिंग्स चेज करेंगे, लक्ष्य का पीछा करेंगे। थोड़ी देर में आपके साथ वापस जुड़ेंगे, बने रहिए। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए।
पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है, कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। We welcome you back to the second innings. Himanshu Sonthalia, the first over has been given to him, and the openers Asif Roshan and Rukhsar Khan are at the crease. 191 is the target that they have to chase. The Mumbai Vikings, a steep target. They need to start off really well, but they will have to blame themselves for the kind of sloppy fielding the fielders did while they were fielding. A lot of runs given today off really poor fielding by the Mumbai Vikings. The first delivery about to be bowled. Himanshu to Asif Roshan. Starts off well. Left arm spinner, the opening batsman for Misfits, bowling the first over. Himanshu Sonthalia, and they'll have to start really well here without losing a wicket. They should be going for a good partnership. Good shot by Asif Roshan. Dr. Asif, as he is. That's a good running between the wickets as well. 2 runs taken quickly, and this time that's a very quick run, but that was a wonderful throw. Just have a look at the throw there. They've appealed for the run out. Oh, and that is really, really close. The on-field umpire has asked the third umpire to take the decision.
The third umpire taking his time, seems it's a very close call. That's a really touch and go. Oh, and that is so close. We'll have to wait for the umpire's decision here. You can just have a look there once again. Oh, and it seems he's just in. Very, probably a centimeter in when the stumps are broken. And that's a not out decision given by the third umpire. Very close and very tough decision for any umpire. It's the right decision at the end of the day. What a start to the second innings. Very big scare for the opener, Asif Roshan. Finally, eventually gets a couple. When this time in the air and he's gone. This is a poor shot. Trying to hit it over the infield and straight into the hands of Shravan Rathod, who was at the catching position for this shot. This is wonderful captaincy by Karan Roya. He's kept a catching position along with the slip as well. In the covers, just have a look at the replay. The first wicket falls in just the first over. Asif Roshan, in an effort to hit the big shot, not able to connect, and a simple catch to Shravan Rathod at covers. We'll take a quick commercial break and be back soon. A poor start by Mumbai Vikings chasing 191. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर। The new batsman Ashish Faujdar is a wonderful cricketer. Has hit a century as well in the TSL this year. And that was against Roaring Lions. Himanshu to Ashish. Big task cut out for him. That's a wonderful shot. This time he starts off really well. It will be a boundary. That is a boundary. Drives it brilliantly towards the wide of long off. That's a good boundary and starts off really well. Ashish, that is what we were mentioning. He has been terrific touch in this tournament. And a huge task cut out for him in this match. 191 to win. They've lost their first wicket. The opener, Asif Roshan, in just the first over. Himanshu Suntalia has taken a wicket. Just got it for a boundary. That's a wonderful comeback and good leave by Ashish as well. Need to settle your nerves first.
That's the end of the first over. The score is 6 for 1 after 1 over. We'll take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Oh, and what a start by Karan Ruya there. The first delivery is bowled him. What a absolute stunning yorker there by the captain of the Misfits team. And the second wicket is down. And this time, Rukhsar Khan playing his first delivery. Could not handle the swing there. Just have a look at the in swing. Absolutely wonderful bowling and in the block hole. He did play that, but then played on. Went back to hit the stumps, and the second wicket down for the Mumbai Vikings. 6 for 2 they are in just the second over. We'll take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम Zan Khan, the new batsman, starts off well. Good drive this time, and he's opened his account with a couple. The previous delivery flicked it towards the fine leg, glanced it towards the fine leg. I beg your pardon. This time it was a wide, a poor delivery.
A single this time. Azan Khan gets off strike. Ashish Faujdar on strike again. Good delivery again. That's the end of the second over. 10 for 2. Mumbai Vikings have started off really poorly. Courtesy some wonderful bowling by the Misfits opening bowlers. We will take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग Oh, and what a shot that is. And that's a wonderful stop as well. Rohit Nimbalkar coming in to bowl his first over. It was a wonderful stop and probably it has hit him, it seems. Wonderful shot by Azan Khan and asking for the spray there. Could have been a wonderful catch. We'll just show you the replay there. That was hit with a lot of power by Azan. He's a strong man. Show you the replay there. Oh, and that was a brilliant shot, but then straight into the hands of the fielder, but he dropped it. Probably hit him as well, so treatment being given. The magic spray, and we'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Oh, and this time a cracker of a shot. Will that be a boundary? It is a boundary. Azan Khan on fire. That was a poor delivery. A lot of wit given, and what a shot that was. Absolutely brilliant batting by Azan Khan. He's a prolific hitter of the cricket ball. And you could see that. The way he hit that shot. Was wit offered, and Azan is not among those who will lose on such opportunities. Oh, and what a comeback delivery. Absolutely stunning bowling. Almost edged it, Azan. With Nimbalkar this time putting in extra effort, extracting a lot of bounce there.
with the replay of that delivery. Just have a look. Oh, and that was a wonderful delivery. Rohit to Azan. That's a good shot again, but then just a single towards the square leg. Ashish Faujdar on strike. Mumbai Vikings need a partnership from both these two batsmen. Oh, and what a delivery by Rohit Nimbalkar. Ashish almost cut into half there with that in swing, but then he played it nicely with the soft hands. Would have played on as well, but then no harm there on that delivery. Oh, and a poor delivery. That is a absolute wild delivery. Not just a wide, but a wild as well. Wide given by the umpire. An extra run added to the tally. A wonderful start by the MISFITS bowlers. 2 wickets they've taken in just the first 3 overs. Mumbai Vikings under a lot of pressure right from the word go in this innings. Oh, and almost hitting back onto the stumps. Almost playing it on. That's a good delivery and ends the over with a very good delivery. Rohit Nimbalkar. 3 over 16 for 2. He's been brilliant, Rohit. Let's have a look at that delivery. Oh, almost played it on to the stumps. Quick commercial break, be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स। This is a wonderful shot. Just a single. And Roya coming into bowl his second over. Wonderful shot. This will be a boundary this time. Absolutely wonderful batting by the batsman there, Ashish Faujdar. His first boundary. That was a full toss and he did not miss on the opportunity. Trying to bowl that yorker again. The intention was pretty good, but the execution just a bit lacking there, and a boundary towards the deep mid wicket. So Ashish Faujdar has started. Another good shot towards the long off, just a single. Oh, and that's a good delivery. Wonderful bowling by Karan Roya. A slower one this time. Azan beaten all ends up. That's a good comeback delivery by Karan.
That's a wide. Karan with his next delivery. Oh, and that's a wonderful delivery. He's bringing the ball back in brilliantly. The captain of the Misfits team, Karan Ruia. Natural in swinger this guy is. Wonderful bowling. Played well by Azan. He stays there for long. Score can definitely reach the required run rate. Azan Khan, a wonderful batsman. Oh, and this time, just have a look at the drive. What a shot that is! Will be a boundary through the covers, in the gap. The fielders, just spectators there. Probably the shot of the evening by Azan Khan. This is absolutely stunning batting. A treat to watch that shot. Just have a look at the replay there. Oh, brilliant drive. Probably the shot of the evening without any doubt. That's the end of the 4th over. The score is 27 for 2 after 4 overs. We'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर Rohit Nimbalkar with his next over. That's a good start. Ashish Faujdar trying to play it over the covers but couldn't connect. That's a short delivery outside the leg stump. What a shot that is for a boundary. Pulled nicely towards the fine leg by Ashish Faujdar. That was a poor delivery. Deserved the treatment. Just have a look at the replay there. Short delivery pitched outside leg stump and deserved this treatment, which was given very nicely by Ashish Faujdar for a boundary. Oh, and coming back really nicely. So Rohit Nimbalkar bowling well in patches there. He bowled a good delivery to Ashish Faujdar in this over and then a poor one. Got hit for a boundary and then came back really strongly with another good delivery. This is a good shot, cut nicely, but good fielding by Nikhil there at the backward point region. Just a single. Nikhil Lekhi doing really good.
stopping the boundary. Oh, and this time he's appealing for an LBW and the umpire not interested. Will they go for a review? Seems it's bat and the keeper suggesting that it was bat. So a good appeal, but then it was bat. We'll just show you the replay there. That was a wonderful delivery, pitched. Oh, and that was bat. This is wonderful umpiring as well. Immediately showed the bat to the umpire. Even the keeper acknowledged that. So good sportsmanship spirit shown by the Misfits wicket keeper, and a good delivery to end the over. So the score is 5 overs, 32 for 2. Karan Roya coming into bowl his next over. He's bowled really well in his 2 overs. And what a shot. That is the first ball of the over and huge hit by Ashish Faujdar. What a shot that was. High and long towards the long on boundary for a huge 6. Ashish Faujdar finding his rhythm slowly, but he's becoming really effective with every over. Quick single taken towards long on. That's a good delivery and well left by Azan as well. That it was missing the leg easily. The leg by signal by the umpire, a quick single taken. Oh, another good shot. This will be another 6 it seems. It is a 6. What a shot again by Ashish Faujdar. He's on fire. 2 sixes in this over and he spoiled Karan's figures here. He was bowling so well prior to this over, but then ball in the slot and Ashish Faujdar is in prime form. We've already mentioned that, and this is the way he starts hitting once he keeps on going. He's unleashing himself, and that is what is required in this final, in this semi-final, which is an eliminator match. The team which would lose today will have to pack their bags and go home. The team which advances today will have to play another eliminator match against the Raging Rhinos, and that's the end of the 6th over. 46 for 2 is the score, and Ashish Faujdar playing really well. We'll now request our Hindi commentator to join in the commentary box and take proceedings further from here. We welcome you again to the commentary box, Shaleen. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, श्रवण राठौड़ को बुलाया गया और आशीष फौजदार अचानक से फॉर्म में आ गए हैं। फॉर्म में चल रहे थे लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी है। 27 रन पर आ गए हैं 17 गेंदों के बाद। अजान खान भी अच्छा खेल रहे हैं, 13 रन पर हैं 15 के बाद।
रमन राठौड़ अजान खान को। अजान आज कुछ शॉट्स इन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं और कुछ जगह पर ये बीट भी हुए हैं, तो आज बहुत ही मिश्रित बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि प्लेयर बहुत घातक हैं, अगर एक बार बल्ले से एक दो बड़े शॉट लग जाएंगे तो मैच का समीकरण बदल सकता है। ये देखिए वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, श्रवण ने अजान को आगे आते हुए देख लिया था, इसलिए गेंद को बाहर रखा ऑफ स्टंप के, लेकिन स्विंग होकर बाहर चली गई, गेंद वाइड हो गई। और इस बार फिर से वाइड होना चाहिए। जी हाँ, वाइड गेंद का इशारा अंपायर के द्वारा। खराब गेंदबाजी है। एक रन के लिए खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अजान ने। बेहतरीन गेंदबाजी और ये कैच की अपील कर रहे हैं। क्या ये आउट है यहाँ पर? जी नहीं, अंपायर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और कैच के लिए रिव्यू नहीं है। रिव्यू मांगने की कोशिश वहाँ पर विकेट कीपर की, हालांकि रिव्यू कैच के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं रिप्ले, बल्ले के बहुत पास से गई गेंद, हालांकि जी नहीं, ये तो कहीं से लग नहीं रहा है कि बाहरी किनारा लगा होगा यहाँ पर। अंपायर भी यही कह रहे थे। गेंद हवा में खेला हुआ शॉट, क्या है यहाँ पर? ये गैप में गया है शॉट, जी नहीं, एक ही रन। और ये यहाँ पर चूक हुई, 2 रन हो गए। मिसफील्डिंग हुई, यहाँ क्षेत्र रक्षण लचर था इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक द्वारा। 2 रन ले लिए और ये 50 रन पूरे इस 2 रन के साथ आशीष फौजदार 29 पर आ गए। देखते देखते सिर्फ 19 गेंदों के बाद 7वां ओवर चल रहा है, 51 हो गया स्कोर। बढ़िया ये जवाब दे रहे हैं मुंबई वाइकिंग्स के बल्लेबाज। अच्छा शॉट आशीष का, 1 ही रन। स्वीपर कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, और ये ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर है 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन साझेदारी ये पनपती हुई। अब आशीष फौजदार 30 पर हैं 20 गेंदों के बाद और 14 पर खेल रहे हैं अहसान। अच्छा साथ दे रहे हैं उनका। और एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है? अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हिमांशु आए अपना अगला ओवर लेकर। एक ही ओवर कराया इन्होंने, 6 रन दिए थे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट आसिफ रोशन का ले लिया था अपने पहले ही ओवर में। और ये देखिए बाहरी किनारा, पहली पारी में भी देखे थे हमने ऐसे शॉट। 4 रन के लिए जाता हुआ 3rd मैन की दिशा में, कोई मौका नहीं किसी क्षेत्र रक्षक के पास। अच्छी शुरुआत इस ओवर की आशीष फौजदार द्वारा।
को रिप्ले दिखाएंगे। देखिए बाहर की गेंद थी और निडर होकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और का फ़ायदा मिला उन्हें। 4 रन मिल गए, बाहरी किनारा लगा और स्लिप के ऊपर से गया, स्लिप हटा लिए, शॉट थर्ड ले लिया है वहाँ पर। और इस बार फिर से विकेट कीपर के पीछे से गई गेंद, एक ही रन होगा इस बार और लेग बाय का इशारा पैड पर लगी थी, पुल करना चाह रहे थे डीप स्क्वायर लेग की तरफ। अच्छी ड्राइव लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। अजान खान थोड़ा सा यहाँ पर दब कर खेल रहे हैं, बंद कर खेल रहे हैं। 19 गेंदों पर 14 रन हो चुके हैं। पिछले कुछ गेंदों में लगातार डॉट गेंदें गई हैं। फिर से चूक गए बड़ा शॉट खेलने से। बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए, लेकिन गेंद नहीं जा रही है, गेंद रुक गई वहां पर। 2 ही रन मिलेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से शॉट अच्छा था लेकिन गेंद पहुंच नहीं पाई वहां पर। और क्या कैच ले लिया है, वाह! हिमांशु सोनथालिया ने आशीष फौजदार को एक बेहतरीन कैच लेकर पेविलियन वापस भेज दिया है। अद्भुत कैच, ये अविश्वसनीय कैच। क्या आउट किया है यहां पर, तारीफ करनी होगी बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये रिप्ले जितनी बार भी देखेंगे आप वापस देखना चाहेंगे। बेहतरीन शॉट और ओ क्या कैच लिया है, वाह! बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय क्षेत्र रक्षण। और ये देखिए, यही फर्क होता है, अगर आप क्षेत्र रक्षण अच्छा रखें आप अच्छे शॉट्स को भी कैच में बदल सकते हैं, जो कि इस बार हिमांशु ने किया। और तीसरा विकेट गिरता हुआ स्तब्ध रह गए हैं मुंबई वाइकिंग्स के खिलाड़ी, और खास करके आशीष फौजदार जो इतना बढ़िया खेल रहे थे। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। क्या कैच लिया हिमांशु ने। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन सनी सोमराजन आए हैं अगला ओवर लेकर। 8 ओवर में स्कोर हो गया है 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन कैच और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया। छोटी गेंद, अजान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, गैप में है और 2 रन मिलने चाहिए। जी नहीं, मना किया वहां पर। कैलाश आए हैं नए बल्लेबाज।
इस बार 1 रन लिया आसानी से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। कैलाश नए बल्लेबाज, खाता खोला उन्होंने अपना। तेजी से 1 रन लिया। सनी का है पहला ओवर। कैलाश वापस स्ट्राइक पर। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं सनी भी, कैलाश भी, माफ़ कीजिएगा। तेज रन लेने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर वापस भेज दिया। और ये हवा में खेला हुआ शॉट और एक कैच ले लिया है। आउट हो गए यहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। कैलाश बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर पहले से ही क्षेत्र रक्षक मौजूद थे और 4 विकेट गिर चुके हैं मुंबई वाइकिंग्स के। ये देखिए कितनी आसानी से कैच ले लिया। दूसरा एंगल से दिखाएंगे रिप्ले। देखिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यहाँ प्रयोग हुआ है और ये पहली बार में चूक गए थे सदानंद पुजारी, लेकिन दूसरी बार में कैच लिया उन्होंने। बहुत ही बेहतरीन कैच और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ एक बार फिर से। 4 विकेट हो गए हैं। सनी सोमराजन ने अपने पहले ओवर में विकेट ले लिया है। कैलाश कि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं पेवेलियन की तरफ जाते हुए। स्कोर हो गया है 64 पे 4। नए बल्लेबाज सुनील सांगले आए हैं। स्ट्राइक पर भी वही होंगे। सनी के पहले ओवर की आखिरी गेंद। नवा ओवर चल रहा है। 4 विकेट गिर चुके हैं। खासी मुश्किल में मुंबई वाइकिंग्स। अच्छी गेंदबाजी सुनील सांगले। पहली गेंद आसानी से खेली उन्होंने। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 64 रन 4 विकेट पर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सनी के बाद अब हिमांशु वापस आए हैं। क्या कैच लिया था हिमांशु ने अपने पिछले ओवर में। आशीष फौजदार को वापस भेजा था पवेलियन। अजान स्ट्राइक पर। अब अजान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हालांकि वो भी बहुत
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो नहीं कर रहे हैं, खासे दबाव में है यहाँ पर मुंबई वाइकिंग्स के बल्लेबाज। 64 रन पर 4 विकेट जा चुके हैं। गेंदबाजी, एक बार फिर से डॉट गेंद, दबाव बढ़ता हुआ। इस बार तेजी से 1 रन लिया कवर पॉइंट की तरफ खेलकर। अजान ने स्ट्राइक बदली और सुनील वापस स्ट्राइक। इस बार 1 रन लिया, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और इस बार अच्छा शॉट खेला है, पुल किया है बैकफुट पर जाकर। 1 ही रन होगा डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन 1 ही रन होगा लॉन्ग ऑन पर। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण रौनक गोस्वामी का, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, क्या फील्डिंग करते हैं और अभी भी उन्होंने यही किया। ओवर की समाप्ति 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर हो गए हैं और ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश अंपायर होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम भी वापस आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।
स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का ड्रिंक्स ब्रेक के बाद इस एलिमिनेटर मैच में मुंबई वाइकिंग्स और मिसफिट्स के बीच जो हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स द सुपर लीग का ये बेहतरीन मैच। सनी सोमराजन आए हैं अगला ओवर लेकर। अच्छा शॉट, लेकिन सीधे श्रवण राठौड़ के हाथ में। कवर्स पर आगे की तरफ लगे हुए हैं, शॉट कवर से थोड़ा सा पीछे। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी। खासे दबाव में मुंबई वाइकिंग्स के बल्लेबाज। 11वां ओवर चल रहा है और 68 रन का स्कोर ही है सिर्फ। 133 रन चाहिए अभी 10 ओवर से भी कम में। बढ़िया शॉट, लेकिन क्या ये कुछ बड़ा रन हो पाएगा? जी नहीं, एक ही रन है। सदानंद पुजारी वहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में बढ़िया क्षेत्र रक्षण करते हुए। एक एक दो दो से काम नहीं चलेगा, यहाँ छक्के चौके लगाने ही पड़ेंगे। कोई खास और आशीष फौजदार और अजान की अच्छी हो रही थी साझेदारी, लेकिन आशीष को एक बहुत ही अद्भुत कैच लेकर हिमांशु ने पेविलियन भेज दिया। बढ़िया शॉट, छोटी गेंद थी, ये चौका होना चाहिए और ये 4 रन। अच्छा प्रयास वहां पर क्षेत्ररक्षक का, लेकिन बढ़िया शॉट था और रिप्ले दिखाएंगे। देखिए खराब गेंद थी, सनी सोमराजन की लेग स्टंप की तरफ छोटी गेंद डाली और पुल किया उसे फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए अजान ने। यही चाहिए अब इन्हें, और ये बच गए। और इस बार फिर से बच गए। बड़े शॉट्स लगाने के प्रयास में यहां पर चूक हो रही है, चकमा खा रहे हैं। ओवर की समाप्ति यहां पर 73 रन स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है? अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। हिमांशु आए अपना आखिरी ओवर लेकर। जबरदस्त गेंदबाजी की है, 3 ओवर में 17 रन और 2 विकेट। दोनों ही महत्वपूर्ण विकेट आसिफ रोशन और आशीष फौजदार को पेविलियन भेजा है हिमांशु ने। अच्छी शुरुआत इनके चौथे ओवर में भी। सुनील सांगले आए हैं 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन। इस तरह की बल्लेबाजी से कुछ खास यहाँ पर फायदा नहीं होने वाला है। आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। हर ओवर में एक चौका तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा, हालांकि अभी तक विफल रहे हैं। एक ही रन इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में। अजान आया वापस स्ट्राइक पर। बेहतरीन शॉट, लेकिन एक ही रन। स्वीपर कवर के क्षेत्र में खेला हो, बढ़िया शॉट, अच्छा ड्राइव था, लेकिन चौके और छक्के तो चाहिए यहाँ पर। 1 रन 2 रन से बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत रन चाहिए, 116 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और सिर्फ 8.3 गेंदें बची हैं। 12 से भी ऊपर का रन रेट। ये देखिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं।
बहुत ज़्यादा दबाव बना रखा है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर। 7 रन प्रति ओवर का भी रन रेट नहीं है, आप देख सकते हैं, जबकि चाहिए था 9.5 का। खेल शुरू हुआ था इस पारी में और 1 रन इस बार मिल जाएगा, ज़्यादा मिलेंगे, चौका हो जाएगा। जी हाँ, अंदरूनी किनारा और 4 रन के लिए गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में। बहुत बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, लेकिन रन यहाँ पर बहुत आवश्यक। और ये देखिए, ये गेंद अच्छी थी लेकिन दुर्भाग्यवश अंदरूनी किनारा लेकर 4 रन के लिए चली गई और ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 12 ओवर के बाद स्कोर है 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब हम अनुरोध करेंगे अपने अंग्रेज़ी कमेंटेटर से कि वो कमेंट्री बॉक्स में आएँ, आगे गतिविधियाँ बढ़ाएं अपनी अंग्रेज़ी कमेंट्री से और अगले कुछ ओवरों तक आपको बेहतरीन मनोरंजित करें। Thanks a lot, Sharin, for a wonderful Hindi commentary. Sunny Somraj and coming into ball is next over. Azan Khan not at all comfortable. He's playing on 24, but he's played 31 deliveries for those 24 runs. So not a very good innings in the context of the game. Oh, and this is what is required here. What a shot that is. Probably, or words have reached there in his ears, and what a shot. Absolutely brilliant batting by Azan Khan this time, and this is what they require regularly. What a shot. ये देखिए रिप्ले, क्या बेहतरीन शॉट, बहुत लंबा छक्का। गेंद भी बाहर चली गई है, नई गेंद ली गई है और ये वाइड होना चाहिए। जी हाँ, खराब गेंदबाजी है, दबाव में की हुई गेंदबाजी है, वाइड दे दिया उन्होंने। एक हैट्रिक रन और जब तक अजान खड़े हैं, मतलब एक चीज़ तो है कि मैच में पूरी तरह आए नहीं है अभी तक, और अजान के पास है वो क्षमता, काबिलियत है इनके पास कि ये बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं और मैच भी जिता सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रन चाहिए, गेंदें बहुत नहीं बची हैं, सिर्फ 7.4 गेंदें, 46 बची हैं। आगे बढ़कर खेला, बढ़िया शॉट, 1 रन होना चाहिए। तारीफ करनी पड़ेगी रौनक गोस्वामी की, ज़बरदस्त क्षेत्ररक्षक। लॉन्ग ऑफ पर इस बार 1 ही रन होने दिया और कोई बल्लेबाज इनके पास से भागने के लिए भी 2 बार सोचता है अगर 2 रन लेना हो तो। इतना ज़बरदस्त इनका थ्रोइंग आर्म है, युवा खिलाड़ी हैं, ज़बरदस्त क्षेत्र रक्षण करते हैं और विकेट कीपर भी हैं रौनक गोस्वामी। ये देखिए फिर से गई उनके पास, लगता है गेंद उन्हें छोड़ी नहीं रही है। इस बार फिर से 1 रन, एक रन से कुछ खास होने नहीं वाला है। और एक बार फिर हम आमंत्रित करते हैं हमारे अंग्रेज़ी कमेंटेटर को, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपसे अलग हो गए थे, वापस हम आपको कमेंट्री बॉक्स में बुलाते हैं। आपका स्वागत है। Thanks a lot, Charlene, once again. Just a single this time towards the long on. That's the end of the 13th over, 90 for 4 after 13 overs. We'll take a quick commercial break and be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Shravan Rathod bowling his second over, started off well. Good shot this time in the air, and in the gap will be a boundary. That's a valiant effort, but that is a boundary. Touch the ropes there. This is wonderful batting by Sunil Sangle, and finally he's come a bit into his element. He's a good hitter of the cricket ball, we all know that, but this time there's no option left now. He will have to start scoring these shots. Oh, and this time just a single, played in the air again towards the third man. Good delivery by Shravan Rathod, a dot delivery there. Zan will have to play gem of an innings today if he wants his team to win. That's a good shot this time. Wonderfully scooped towards the fine leg for a boundary. What a shot that is. And the 100 is up for the Mumbai Vikings after the end of 14 overs, 102 for 4. That was a wonderful shot. I'll show you the replay there. Just have a look at that. Absolutely stunning shot by Azan Khan. Oh, and this is really good. Not at all easy for any batsman to play that shot, but wonderfully played by Azan there. A boundary towards the fine leg. We'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा।
सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में What a shot that is. Good start to the new over. Sunil Sangle now hitting wonderful shots. Took a lot of time to settle down, and now he's hitting some good boundaries. Sunny Somrajan coming to bowl his next and last over. That's a good shot straight down the ground for a boundary. What a shot that was. The low full toss there played really well by Sunil. Another wonderful shot and another boundary this time. What good batting that is by Sunil Sangle. He's been terrific in this over. 2 balls and 2 wonderful boundaries. Sunny Somrajan will have to do a lot of rethinking. Let's have a look at that shot again. Flattish delivery but played really well. Straight behind the bowler. Oh, and this time he has got caught. What a catch by Ronak Goswami there. An absolute stunner of a catch. And he's been shocked there, the batsman. Probably he was hoping that this could go to the boundary, but there was Ronak Goswami, probably the best fielder in the team of Misfits. And what a catch. A treat to watch. Just have a look at the replay there. Brilliant catching that is. Oh, and not at all an easy catch. You'll have to give it to the fielder there, Ronak Goswami. Absolutely stunning fielding. The difference in the fielding making a lot of difference in the match as well for the Misfits here. They have taken some stunning catches, and this was another one by Ronak Goswami. Brilliant that was by the long off fielder. And the 5th wicket for the Mumbai Vikings is down now, 110 for 5. They are in a lot of trouble now. 14.3 overs. There's 5.3 overs left. We'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन, मुझे पता है कैन हेल्प। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम। Sunny Somrajan has taken 2 wickets after that wonderful catch by Ronak, and Azan back on strike because the single was not completed and they had changed strike. New batsman Affan Virani playing his first delivery in this match and the innings. Mumbai Vikings in a lot of trouble, 111 for 5, and Affan has it in him to just take the game away from any opposition in just the last 5-6 overs. He starts off with a big shot, but that seems to be quite high in the air. Is that long as well? Oh, and he's dropped it. He almost reached there, Sadanand Pujari. He got both hands to that and he's dropped it. So Affan gets life. The very first delivery he faces. This could be ominous signs for the Misfit team. Just have a look at that drop, catch. He was there. He came running from all the way from the long on and dropped the catch. Not an easy catch at all, but then
If you get 2 hands to that, you should be taking that. That's the end of the 15th over. 113 for 5. Good spell ended with a dot. Somrajan doing really well. 78 needed now of just 5 overs. 30 deliveries at the helm, and 15.6 runs per over is almost impossible task, but then nothing is impossible in cricket. You all know that till a point where you still have hope. Fan Virani and Azan Khan both have the capability to achieve the target of 191, but still a lot of work needs to be done. Just 30 deliveries remaining, and the work needs to be done really quickly. They don't have time. They can't afford even a single dot delivery right now. Last 5 overs remaining in this match. They've lost 5 wickets, Mumbai Vikings. Shravan Rathod coming into bowl his next over. He's bowled really well in his 2 overs. However, he's been hit for some runs, 18 of his 2 overs, but he starts off really well this time. And this time it's a wonderful ball. Is that caught? They are appealing for a caught behind. The umpire not interested. Oh, and the umpire has given him out. The batsman not happy, so we'll have to just have a look at the replay. Was that an edge? Shravan Rathod this time. Oh, and it seemed there was an edge, but we cannot confirm it from here. But the umpire is the best judge in such cases, and the umpire gives him out. So a wonderful wicket taken by Shravan Rathod, and the batsman just not happy with the decision, it seems. And he's been given out, and 6th wicket down for Mumbai Vikings. Azan Khan's reaction says it all. He's just not happy with the decision. But from this angle, it seems there was an edge. We cannot confirm that for sure, but then the umpire is the best judge, as we mentioned earlier as well. And as per the umpire, that's out. That has got nicked. Azan, look at the reaction, not happy at all. This time it's a wide. The new batsman Amol Pawar on strike. 6 wickets have gone down. 113, 14 for 6. I beg your pardon. This is a 16th over. It's a good shot towards the long off, just a single. Southern Pujari there. Shravan Rathod has been really good in this over.
Oh, and Ronak this time fumbles but takes the catch. And the 7th wicket is down, and a nervy catch by Ronak there, Ronak Goswami. A wonderful fielder, but this time fumbled it on the first go, and this can happen to any of the players. This is a pressure match. Just have a look. Oh, and he almost dropped it, but a superb recovery by Ronak Goswami, and he's taken his second catch of this innings. Wonderful piece of fielding by Ronak again. And the 7th wicket is down for Mumbai Vikings. This match seems to be a mere formality now. Not a lot of deliveries left, and Amol Pawar will have to play out of his skin now, as Afan Virani is also gone. We'll take a quick commercial break. Be back soon. Stay tuned, viewers. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। This time playing in the air again, but in the gap, just a single. Amol Pawar doing well there. That's the end of the 16th over. 75 runs required now in the last 4 overs. The score is 116 for 7 after 16 overs. Shravan Rathod coming into bowl his next over. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। Abhishek Singh is the new batsman. Rohit Nimbalkar coming to bowl his next over. He's bowled really well. 2 overs, 11 runs only is given. This is a 17th over in this innings. Starts off poorly there. Rohit giving a wide down the leg side. This is a good shot, but just single. Singles won't help. They need to hit some big sixes now, or boundaries, if not sixes.
Another good delivery. Abhishek on strike. This was his first delivery. This is a wonderful shot by Abhishek. Will be a boundary. What a start that by Abhishek. That was pitched up, and Abhishek playing really well. Making slight room for himself. Just have a look at that shot. Oh, and that is a good shot. Shuffles across the leg stump and hits it towards the deep point region. Going for a boundary there. The third man fielder could not do much about it. That's a good delivery. Trying to hit the big shot, not succeeding. This is the 17th over, last 20 deliveries remaining in this match. Hit straight to the fielder there. And a single taken quickly by Abhishek. That's a good delivery. Again. Another single this time. So that's the end of the 17th over, and the 18th over has been started by Shravan Rathod. 125 is the score. Just 17 deliveries left. This is a good shot, but again a single only towards the third man region. Oh, and that's a wonderful shot. Will that be a big one? We'll have to see that. Oh, and almost a stunning catch. 2 runs taken there, but what an effort that was by the fielder. Let's have a look at the replay. Abhishek trying to hit the big
shot there. Almost got caught there, but that was such a wonderful effort by the deep mid-wicket fielder. Oh, and would have been probably the catch of the tournament had he got a grab of that. He tried his best. Shavandra thought this is the last over. Oh, and this time Abhishek hitting it really well, but is that in the hands of the fielder? No, and it dropped short again. Ronak Goswami, as usual, a poor throw by him this time. 2 runs taken by Abhishek. This is good batting by Abhishek, but then only 14 deliveries remaining. He will have to probably hit all of them for sixes if he wants to make his team win the match. Oh, and that's a very poor delivery. That's a wide. Don't need to say anything about that. This is basic stuff. You have to abide by that no matter what level you're playing. Probably slipped from his hand that time. Oh, and that's a good delivery. Abhishek missing that completely. Was trying to hit a big shot. Another good shot, but just a single this time again. और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ। अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हटके, जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। The 19th over being bowled by Rohit Nimbalkar. We'll request our Hindi commentator now to take the proceedings ahead and continue till the end of this match. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी 2 ओवर का खेल बचा है, उसमें भी 2 गेंदें हो चुकी हैं रोहित निम्बालकर की। और ये वाइड गेंद।
अच्छा शॉट, 2 रन के लिए वापसी की यहाँ पर अमोल पवार ने। 19वां ओवर चल रहा है। श्रवण राठौड़, माफ कीजिएगा, रोहित निम्बालकर गेंदबाजी डाल रहे हैं। सिर्फ कुछ ही गेंदें बची हैं इस मैच में, 7 गेंदें बची हैं। और ये बहुत ही अच्छा कैच लिया है रोहित निम्बालकर के लिए, एक सफलता आखिरकार। अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने और स्पेल की आखिरी गेंद पर एक विकेट ले लिया इन्होंने। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास यहाँ पर अमोल पवार का और यही चाहिए था। डीप मिड विकेट में लपक लिए गए। और ये 8वां विकेट गिरता हुआ 19 ओवर के बाद 137 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। और ये 9वां विकेट गिरता हुआ अभिषेक के रूप में। राहुल राजपूत आए हैं अपना पहला ओवर लेकर। इस मैच का अंतिम ओवर है, लेकिन आते ही उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया और पहली गेंद पर बोल्ड कर दिया है अभिषेक सिंह को। अभिषेक की अच्छी पारी है 12 रनों की, हालांकि 13 गेंदें ली उन्होंने, लेकिन ऑस्टम उनका इस बार बिखेर दिया राहुल राजपूत ने। और 9वां विकेट गिरता हुआ 133 के स्कोर पर। और अब सिर्फ 1 विकेट चाहिए इस मैच को ख़त्म करने के लिए। हालांकि 5 गेंदें ही बची हैं, तो अगर 9 विकेट ही गिरेंगे तो भी मैच तो नहीं जीत पाएंगे मुंबई वाइकिंग्स के खिलाड़ी। और अब आखिरी विकेट बचा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और सचिन जी करिए सिलेक्ट। मुझे क्या पता कौन कैसे खेलता है। अरे रे सो सैड। सचिन मुझे पता है क्या नल। तो आ जाओ गुरु, आ जाओ आ जाओ, अब खेलने में मजा आएगा। सचिन की तरह पेटीएम फर्स्ट गेम्स पे आप भी क्रिकेट के गुरुओं से सीखिए और बेहतर खेलिए। पेटीएम फर्स्ट गेम्स, खेलो हट के जीतो जम के। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और सचिन एक रन लिया वहां पर। कनिष्क पटेल आए हैं। अच्छा शॉट कनिष्क का, लेकिन एक ही रन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। और अमन चड्ढा कप्तान इस दल के बल्लेबाजी करने उतरे हैं। सिर्फ 2 गेंदें बची हैं राहुल राजपूत और अमन चड्ढा के बीच। देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला। हालांकि राहुल राजपूत की अच्छी गेंद, सिर्फ 1 गेंद बची है।
बेहतरीन शॉट, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इस शॉट से और ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ मैच भी समाप्त हो चुका है। 49 रनों की बेहतरीन विजय प्राप्त हुई है यहाँ पर मिसफिट्स दल को और उन्होंने पहला एलिमिनेटर जीत लिया है। अब उन्हें रेजिंग राइनोस के साथ दूसरा एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए, जहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं एथलेटिक कैंगरूस। और ये मैच की समाप्ति होते हुए और हम सभी दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहेंगे जिन्होंने हमेशा हमें बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। TSL के अगले एलिमिनेटर मैच में आपके साथ वापस जुड़ेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपके साथ वापस जुड़ेंगे द सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर मैच में। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद और शुभ रात्रि।